Welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall revise the chapters which will come in our periodic test 2. So, let us first see the chapters which will be there in our periodic test 2. Unit 6, that is poem class discussion. Then, the talkative barber. Then, Unit 7, topsy-turvy land. Again in Unit 7, Gulliver's Travel. And from Unit 8, we will take only one poem, and the name of the poem is Nobody's Friend. Dear students, I hope that this revision will be very helpful to you for your upcoming examination, that is periodic test 2. Let us move on to the revision. From Unit 6, class discussion. See, first thing you need to understand is that you should remember the word meaning of all these 5 chapters. 2 from Unit 6, 2 from Unit 7, and 1 from Unit 8. So you must be by heart all the meanings of these new words. So new words, discussion, talking together in a group on a single topic. Aid, make public, barely, only just, stare, look, fixedly with eyes wide open. Plain, here or clear. See, by using in our day-to-day life only we can learn the meaning of these words. So make it use in your day-to-day life so that you can easily remember the word meaning of this new word. Now come to the question answers for this chapter. What activity was going on in the class? Obviously there was a class discussion, but see, whenever you are writing an answer, it is compulsory for all of you to write the answer in full sentences, full sentence. Then and only then you will get the marks for this. A discussion was going on in the class. This question can be asked in 1 marks. Who was the quiet one in the class? Jan was the quiet one in the class. So these 2 questions can be asked in 1 marks. Next, why was she quiet? See, here you are having a multiple choice question. So you have got the 4 options and you have to select any one. One is she was afraid to air her opinions. She hated the noise. She didn't like the activity. She was quiet by nature. So correct answer you have to select. That is answer. That is the 4th option. She was quiet by nature. So this you have to come to the next. How do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? See, in our class, most of the students are participating in discussion except 1 or 2. So you have to write your opinion that what do you do when there is a class discussion in your class. Answer: I actively participate in class discussions. I don't like to be quiet. See, if being the children, you should not remain quiet during the classroom discussion. Let us move ahead. Let's read and do. See, 1 or 2 marks questions can be asked from these. That in which year the Indian Council of Child Welfare started this National Bravery Award. So you can write there 1957. Like this, you have to answer. So we'll read it out. Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. Brave children are awarded cash prizes, free school education, and a certificate from the Prime Minister of India. They ride on an elephant in the Republic Day parade. See, 5 marks, a creative writing of 5 marks can be asked from these, because in that question they will ask that write about National Bravery Award. So you have to write that it is started in 1957 and it was started by Indian Council of Child Welfare. Like that you can write. And in a Bravery Award, children are awarded with cash prizes, free school education, and a certificate from the Prime Minister. Prime Minister of India. They ride on an elephant. So like this, you have to write 5 sentences about the Indian National Bravery, the National Bravery Awards.
Now, you can also quote the examples in your writing, creative writing. Harsh Srivastav, a 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of raging bull. Yamunan Jaydev Singh, 11 years old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. The act of bravery was recognized because of saved the life of an infant. See, if you are unable to remember this, just leave it. अगर आप इसको याद नहीं कर पाते तो इसको छोड़ दीजिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही लिखना है. आपका काम जो है इतना लिखने से ही 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे और आपके पूरे 5 मार्क्स इससे कवर हो जाते हैं. तो ये क्रिएटिव राइटिंग में आपको पूछा जा सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. This is find one story, so this will not be covered, so we'll cross mark it. It's my pencil. Yes, so this will not be covered. To the next, again we'll take the laser point. Write notice. See, in exam you may be asked that you have to write notice some uh, कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके ऊपर शायद आपको नोटिस लिखना हो सकता है. नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट. सी, नोटिस में से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये WH क्वेश्चंस हम लोग यूज करेंगे, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट. तो यहाँ पर हम लोग एक नोटिस है, उस नोटिस को एक बार रीड करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board. Read Sheila's notice. Discuss the question that follow. First of all, let us read the notice. Notice: the drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We'll plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? Sheila. Now, on the basis of these notice, we have to answer this question. Who was to meet? Obviously, from the first line, we will get the answer. That is, the drama committee was to meet. When were they to meet? See, here two questions arise. When means you have to indicate time or day. So here we can see that it is on Monday and at 2 o'clock. So we'll write they were to meet at 2 o'clock, and we will add one more word here, on Monday. They were to meet at 2 o'clock on Monday. Where were they to meet? वो लोग कहाँ मिलने वाले थे? In the classroom. They were to meet in the classroom. What were they to do? They were to plan a play for their annual day. Now see, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा एक नोटिस दिया जाएगा, उसके ऊपर से कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने हो नोटिस को पढ़ के, तो ये भी चीज हो सकती है. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट. सी, ऐसा राइट नोटिस अबाउट लाइब्रेरी कमिटी और फुटबॉल मैच, ऐसी नोटिस लिखने को भी आपको 5 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग में पूछ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, टॉकेटिव बार्बर. सी, हम लोग पूरा चैप्टर सब कवर नहीं कर रहे, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि 30 मार्क का ही पेपर होने वाला है. 10 मार्क्स का आपका ओरल है, जो 30 मार्क्स में से जो है जितना कवर होने वाला है उतना ही हम लोग लेने वाले हैं. ओके, सो द टॉकेटिव बार्बर. न्यू वर्ड्स, यू हैव टू learn all this by heart, these new words. Chatterer, someone who talks a lot. Defect, that is a fault. Opinion, what a person feels about a person, thing or subject. Exhausted, tired and fed up. Dessert, a sweet dish served after the main meal. Examine, to look at something very carefully. At length, at stretch. We have discussed all these new words with meanings in our classroom, so you can refer to that, or you can read this and you can learn it by heart after seeing this. Come to the question answer of the talkative barber. How many brothers did the barber have? As per the text, we can say that the barber had 6 brothers. Why was Sultan in a hurry? Because he had organized a feast for some of his friends. He was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon. See, you have to write the answer in full sentence. पूरे sentence में आपको ये answer देना है. Okay, now come to the next. Why did the barber take so long to shave the Sultan? वो इतना बात करता था तो फिर टाइम लगाएगा ही ना.
तो आप भी जब काम करते हैं, जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बातों में कम ध्यान दीजिए, रीडिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आपके मार्क्स होते हैं वही ज्यादा बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी. सपोज इफ एनीवन इन द क्लास गॉट ए प्लस और 30 आउट ऑफ 30, दैट मीन्स उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसके मार्क्स बोलेंगे. So the answer for this question is answer. The barber took so long to shave the Sultan because he switched over to talking every now and then. बार बार जो है अपनी जो काम से स्विच कर देता था, कहाँ स्विच कर देता था, सीधा ही बातों पे स्विच कर देता था, इसीलिए उसको जो है इतना टाइम लगा. Come to the next slide. Now here we will write true or false. This can be asked in 1 marks question. The barber was shaving Sultan's beard. Absolutely no. So this is false. The Sultan gave him 3 gold coins. Yes, this is right. So we'll write true. The barber refused to leave the Sultan's palace. Again, it is true. There were 7 brothers all together in Sultan's family. No, Sultan की family के कितने members थे उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया. यहाँ जो barber की families थे उसके बारे में बताया गया है. So this is false. Why did the barber want a lot of food? So the barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. अब यहाँ सुल्तान ने इनवाइट किया था, वहां बार्बर ने भी इनवाइट किया था अपने 3 या 4 दोस्तों को लंच के लिए, तो उसको भी बहुत सारा खाना चाहिए था ताकि वो अपने घर लेकर जाए. Now let's talk. Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? क्या सुल्तान ने मजे लिए क्या? बार्बर जो बातें कर रहा था उसका उसने आनंद उठाया क्या? अगर नहीं उठाया तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और उठाया है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? So let us see the answer. No, absolutely no. Sultan was tired of that talkative barber. The Sultan didn't enjoy the barber's talk. I say so because he gave all the food prepared for him to the barber in order to get rid of him. वो इतना परेशान हो गया कि उसने अपने दोस्तों के लिए जो फीस्ट ऑर्गेनाइज किया था वो भी उसने क्या किया, बार्बर को दे दिया, ले भाई तू जा और हमें जो है मेंटल पीस या शांति लेने दे, हम खाना दूसरा पका लेंगे लेकिन तू मत पका, यहाँ से चला जा. To the next question, which part of the story did you find the funniest? ये वाला आंसर जो है आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं कि स्टोरी में सबसे फनीएस्ट जो है वो क्या लगा, ठीक है ना. द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज लीविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हेड हाफ शेव्ड. मतलब वो टाइम देखने चला गया कि उसका आधा सिर जो है वो शेव्ड कर दिया और टाइम देखने चला गया. आप ये भी कह सकते हैं इसमें तो कुछ और भी आप लिख सकते हैं कि जैसे देखा जाए तो 6 भाइयों में सबसे क्वाइट है, नहीं, ही वाज द मोस्ट टॉकेटिव ऑफ ऑल ऑफ 6 brothers. So, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आपको जो भी फनीएस्ट मोमेंट यहाँ पर लगा हो आप उसको कोट कर सकते हैं. बट लिसन केयरफुली, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन फुल सेंटेंसेस. टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गिव टू द बार्बर? सुल्तान ने क्या क्या उसको दे दिया? The Sultan gave 3 pieces of gold and all the food prepared for him and fruits to the barber. उसको तो 3 gold coins भी दिए, 3 gold pieces भी दिए, खाना पकाया था वो भी दिया, और लास्ट में जो डेजर्ट थे, जो फ्रूट्स थे, वो भी उसको दे दिए, भाई तू जा और ये सब लेकर जा. Now, do you think the Sultan was really very generous? Why do you say so? सुल्तान जेनरस तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जेनरस का मतलब क्या है, उदार था. क्या उदार तो नहीं कह सकते, वो एक्चुअली उससे पक गया था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था. सो दैट इज व्हाई ही गेव अवे ऑल द फूड, 3 gold coins एंड fruits to the barber. Now, I am not sure. In my opinion, the Sultan showed his generosity in order to get his head fully shaved. सही बात है, मतलब उसका पूरा जो है हेड पूरा शेव कर दे, उसी वजह से उसने जनरसिटी दिखाई थी, बाकी वो जनरस था नहीं. ऐसा आप कह सकते हैं कि था, ऐसा नहीं है, ठीक है. इन योर ओपिनियन यहाँ पर पूछा है ना, व्हाई डू यू से सो, वो हो सकता है आपके हिसाब से हो, तो आप वैसा आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं. Now word building. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column 2 are the opposite of the words in column 1. See, here you can see these 3 words: important, patient, and pleasure. Here you can see un, im, and dis is prefixed, means written before these 3 words. So these important and unimportant, they are opposite of each other. So हमने इन दोनों को opposite बना दिया, तो ये सभी तीनों words इसके opposite है, सब में अलग अलग चीजें यूज हुई है, जैसे unimportant, impatient and displeasure. तो हम यहाँ पर
ऐसे वर्ड्स देखेंगे. See, these kind of questions can be asked in grammar for 1 mark. Now, write the opposites of the following using un, im, and dis. Believe, disbelieve. If it is believable, believable is an adjective. If it is believable, then we will write unbelievable. But believe is a verb, so we will make it disbelieve. Okay. Shaved, unshaved, perfect, that is imperfect, satisfied, that is dissatisfied, polite, impolite, respect, disrespect, pure, that is impure, expected, unexpected, obedient, disobedient. So, like this, you have to learn this word, opposites of these words. Okay, now come to the next. See here, ये वाला हमने इसीलिए कवर किया है. ये फिल इन द ब्लैंक्स कभी आपको पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इनको पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे. आप 30 मार्क्स के या 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का कितना पूछेंगे, तो ये आपको पूछे नहीं जाएंगे. लेकिन इसको हमने इसीलिए कवर किया है ताकि ये जो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं, इनके ऑपोजिट्स आपको पता लगे. हो सकता है इसको ग्रामर में पूछ ले या स्पेलिंग में पूछ ले कि इसके ऑपोजिट्स आप बताइए. सो इसीलिए हमने इसको कवर किया है. सो हम लोग डायरेक्टली इसके टॉपिक पर आएंगे और इसके tidy, that is untidy, able, and the opposite of able is unable, like and opposite of like is dislike, possible and opposite of possible is impossible, appear and the opposite of appear is disappear, patient and the opposite of patient is impatient, kind and that is unkind. So like this you have to remember these opposite of these words. Come to the next unit 7, topsy turvy land, new words. See, मैंने पहले भी कहा कि आपके जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने मतलब पढ़े हैं, हम लोग देखा जाए यूनिट 6 के 2 चैप्टर, यूनिट 7 के और यूनिट 8 का एक जो पोयम है उसके तो न्यू वर्ड्स है ही नहीं. यानी आपकी जो टोटल 4 लेसन्स है या 2 पोयम्स एंड 2 लेसन्स है, उनकी न्यू वर्ड्स आपकी उसकी मीनिंग्स है उसके साथ उसको याद करने हैं. नाउ न्यू वर्ड्स, टॉपसी टर्वी मींस अपसाइड डाउन, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा. प्लेजर, yes, can anybody please type in the opposite of pleasure? You can, I would love to see the opposite of pleasure. It is displeasure. Good. Pleasure means feeling of enjoyment. Grand means very big. Here it is a great fun. The meaning of grand means great fun. Now come to the question answers of this. When do children go to school in topsy-turvy land? See, in our regular life, we observe that the students are going to the school in a day. But in a topsy-turvy land, the children will go to the school at night. In topsy-turvy land, children go to school at night. In the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? देखो पोयम में क्या बताया गया है, पोयम में ये बताया गया है कि बस जो है वो सी के ऊपर ट्रैवल कर रही है, यानी पानी में ट्रैवल कर रही है. तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करेगी? एक्चुअली राइट क्या होता है, क्या बस को जो है सी के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स. जो पोयम में बताया गया है उसमें क्या लिखा है? द बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स. एक्चुअली दे शुड ट्रैवल ऑन द सी, because that is the right place for the boats. Yes. Now, these questions may be asked in 5 marks question in your creative writing. Like this only they will be asked. So 1, 2, 3, 4, 5. So like this 1 mark. So they will award you 5 marks. The topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences wherever needed. See, यहाँ पर जरूरत है जो मतलब blanks है उसको हमें जो fill up करना है. This is topsy-turvy land and this is our normal land. People walk on their heads. हमारे क्या होता है? People walk on the legs, on the feet. Yes. The buses run on land. यहाँ पर क्या होता है? Sea है ना? The buses run on the sea. They wear their hats on feet. ये जो अपनी hat होते हैं वो पाँव में पहनते हैं. We are on head. They wear the hats on head. Now come to this one. Boats sail in the sea. This is the right because this is of our land, and here in the street. Boats sail in the street.
पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। देखो यहाँ पर भाई उसके भी पैसे देने पड़ते हैं जो तुम्हें चाहिए नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हमें जो चीज चाहिए, पीपल पे ओनली फॉर व्हाट दे गेट और दे नीड। Now, the words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. See, यहाँ पर है ना बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए, यू कैन सी द कैपिटल लेटर्स जो है ना यहाँ पर, दिस इज आर, दिस इज एच, अगेन दिस इज एस एंड दिस इज डब्ल्यू, सो दे आर द वर्ड्स बिगिन विद कैपिटल लेटर, वो क्या है, वो फर्स्ट वर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है रेनू नॉटी इज अ गर्ल, सो द करेक्ट, दिस इज अ जम्बल्ड, तो हमें इसको अरेंज करना है। अगर सही से इसको अरेंज करेंगे देन रेनू इज अ नॉटी गर्ल। अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, सो हर इज द जो है वो सबसे पहले आएगा। Her room is always untidy. You can also type here the opposite of untidy. I will love to see the answers. What is the opposite of untidy? It is tidy, yes. Mother, her advice is her clean to eat. See here, H is capital. So, तो जो पहले लिखेंगे, her mother advises her to clean it. Never listens she, her mother to. Here, she, the S of the she is capital, so this will be the first word. So, the answer is she never listens to her mother. Kind of what child you are? See, this W is capital, so what will be the first word of the sentence? What kind of a child are you? What kind of a child are you? This is the correct. See, question marks लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है because it is a question. So जितना दिया है उतना तो हमें अरेंज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना ही है, ठीक है ना, तो ये बोलना है नहीं। Yes. Now this is again a creative writing 5 marks question. Write 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. See, what all things you do at your home to help your mother or your father. So you can write it down. आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर बताया गया है वही लिखना है। Okay. See these things. I arrange my bed every morning. I clean my toilet every day. See, I don't think the most of you will do this one, but if you do, it is very good, very nice. Keep it up, keep on doing this. I keep my book shelves arranged. See, it is your duty to keep your room up to date. I sometimes sweep the floor of my study room. Good, you can help your mother by sweeping the floor of your study room. I always keep my shoes in shoe rack after use. हम यूज करने के बाद जो है शूज को जब भी बाहर खेल के आते हैं या स्कूल से आते हैं, दैट आई विल कीप माय शूज इन शू रैक after the use. Like that you can write it in your answer sheet. Yes, now come to the second part of unit 7, Gulliver's Travel. See, I also told you that you should learn the new words and word meanings of all 5 chapters. Fifth वाले का तो है ही नहीं, तो ये लास्ट वाला है. New words: billowing, very loud noise; inhabitants, occupants; barren, land with no vegetation, जहां पर कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, land with no vegetation; astonishment, greatly surprised. एस्टोनिश्ड बोलते हैं ना, स्तंभित हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब वो सरप्राइज हो जाता है, दैट इज एस्टोनिश्ड. ट्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देते हैं. ग्रैब, पिक सडनली. यहाँ पर जो है ग्रैब मतलब कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है, तो यहाँ पर किसी चीज को सडनली पिक कर लिया है, पकड़ लिया है, दैट इज ग्रैब. सो यू कैन लर्न दिस. Come to the question answers of Gulliver's Travel. Why did the captain send the man to the land? The captain sent the man to the land to look for water. सी, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने का तो एक ही तरीका है कि उसको अच्छे से रीड करो और लिखो. हो सके तो 3 या 4 बार 5 बार उसको लिखो ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो. और दूसरी चीज क्या है, आपको ये भी फायदा होगा कि आप जो है आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो. Why did the man rush back to the ship? The man rushed back to the ship because they were chased by a giant. वो जो जायंट बंदा था उनके पीछे दौड़ने लगा, तो ये लोग क्या किए, भागो भागो अपनी जान बचाओ. So they rush back to the ship. Now here these questions can be asked in 1 marks. कौन बनेगा करोड़पति like question?
Choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because he was fighting with the other giants. Second, he was going to reap the corn. Third, he wanted to frighten Gulliver. Of course, the second one will be the right answer. He was going to reap the corn. On to the next, second one. They put Gulliver on the ground to look at him because the first option is they had never seen a human before. Obviously ये तो कभी नहीं होगा, क्या उन्होंने पहले इंसान कभी नहीं देखा था. So इसको क्रॉस करो. They thought he was a doll. उनको ये भी पता था कि ये डॉल नहीं है. They had never seen such a tiny man, so the C is the right option. उन्होंने इतना छोटा इंसान कभी देखा था नहीं. Next one, the Gulliver was a farmer, a sailor, a dwarf, or a giant. See, farmer तो था नहीं वो. Sailor कह सकते हैं क्योंकि वो सब नाव में आए थे. That means he was a sailor. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The world begins with the letter D. Of course, डायनासोर जो है वही आएगा. वहां पर हम लोग जो है गलीवर जैसे ही दिखेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा? डायनासोर आएगा. ये जो है आपको स्पेलिंग्स में पूछ सकते हैं. 5 मार्क्स का आपका स्पेलिंग्स रहता है, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. एक वर्ड देते हैं या मिसिंग वर्ड्स देते हैं, तो आपको वर्ड लिखना रहता है. जैसे टॉपसी टर्वी है, तो उन्होंने से बीच में से अगर 2 लेटर हटा देंगे तो आपको उसको फिलअप करना है और करेक्ट आंसर वहां पर लिखना है. तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. तो द करेक्ट आंसर इज डायनासोर. Now complete the following. Use the words given in the box. Now see, we have to fill up these blanks by using these words. So we'll try to understand this. See, here we are comparing the same kind of thing. किसी ऐसी चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे कोई ऐसी चीज के साथ जिनके अंदर सिमिलरिटीज रहती है. सपोज एज डैश एज अ फेदर. फेदर जो है वो बहुत लाइट होता है, हल्का होता है. सो एज लाइट एज feather. As dash as a tortoise. So tortoise is slow, very slow. So here it is as slow as a tortoise. As dash as honey. Honey जो है वो बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है ना. So हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर? As sweet as honey. Dash as snow. So as white as snow. Snow जितना white कुछ होता नहीं है. So as white as snow. As dash as an ox. So here, if we will select the correct answer, we can say that strong. As strong as an ox. As dash as night. So as dark as black as night. As dark as night भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है black दिया है. So we will use only black. As dash as a rose. So as red as a rose. As dash as a toast. So here warm we will use. See, आप लोग जब ऐसे क्वेश्चंस में सिलेक्ट करते हैं ना, तो जो जो वर्ड्स हमने यूज किया ना उसको क्रॉस करते जाइए ताकि आपको कंफ्यूज न करे वो वर्ड्स. As a toast. So here we will use warm. As dash as a breeze. जो लास्ट वाला बचा है वो वाला ही हम लोग लिख लेंगे. As gentle as a breeze. Now use the above expressions to complete the following sentences. ये जो है हमें sentences ऊपर वाले expressions use करके हम लोगों को ये sentences complete करने हैं. The old man's hair is as white as snow. Okay. His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow as tortoise in delivering the papers. I felt as light as feather after exercising. So like this you can compare the two things. Okay, तो इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं. Now create your own comparisons for the following work in pairs. See, यहाँ पर तो है हम लोग आप लोग आपके जैसा भी कुछ यूज कर सकते हैं. As tall as जिराफ आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है as tall as the कुतुब मीनार. As fast as the cheetah. As high as the Mount Everest. You can also write it here. Eiffel Tower. As high as Eiffel Tower, as the Eiffel Tower. As angry as a bull or an ox. As tiny as an ant. As brave as
a soldier. So यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है जो हमने ऑप्शंस लिखे वही ऑप्शंस आप लिखे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप चाहे तो अपने खुद के भी ऑप्शंस यहाँ पर लिख सकते हैं. Okay, now here we are also comparing the things. Look at the following examples. When first two are compared, when first two are compared and when all three are compared. See, this is first one. This is fast. So this motor car is faster than the boat, and this aeroplane is the fastest of all of them. Means इससे भी ज्यादा फास्ट है और इससे भी ज्यादा, इन तीनों में जो सबसे फास्ट जो है वो क्या होता है, हमारा एरोप्लेन है. द सेल बोट इज फास्ट, द कार इज फास्टर देन द सेल बोट, एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फास्ट को ER लगा दिया है, यानी यहाँ पर दो चीजों की कंपैरिजन हुई है. द कार इज फास्टर देन द सेल बोट, यानी सेल बोट से फास्ट जा रही है. द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी ये तीनों से जो है सबसे फास्ट, जो इन तीनों में कंपैरिजन की जाए तो सबसे फास्ट क्या है, एरोप्लेन है. कम टू द न्यू वर्ड्स. Difficult, more difficult, most difficult. देखो, many students were asked in our regular classroom teaching that why don't we use here ER and EST, that difficulter and difficultest. See, कुछ words जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इसी वजह से उनके आगे जो है, जैसे beautiful है, more beautiful and the most beautiful उसके साथ यूज किया जाता है. Hitting a target is difficult. Juggling caps is more difficult than hitting a target. Juggling caps मतलब जो जोकर वगैरह जो सर्कस में अपनी कैप्स घुमाते हैं ना, तो मतलब वो ज्यादा डिफिकल्ट है, किससे, टारगेट को हिट करने से ज्यादा डिफिकल्ट. डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स is the most difficult of them all. Here the meaning of them all means hitting target first one and juggling caps. इन तीनों के, और ये जो मैजिक ट्रिक्स है, इन तीनों में अगर सबसे जो टफ चीज कोई मानी जाती है, द मोस्ट डिफिकल्ट, दैट इज मैजिक ट्रिक्स. सो ये क्या है, थोड़ा नीचे का फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, और उससे ऊपर कुछ है नहीं. Now complete this filling the blanks. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. See, we have to, इसको जो कंप्लीट करना है easy और strong, तो skipping is easy, very easy, skipping कोई भी कर सकता है. Dumping is easier than skipping. Walking is the easiest of all. सी यहाँ पर हमने EST किया, यहाँ पर ER यूज किया है. एक चीज याद रखिए, जब भी लास्ट में Y होता है उस समय हम लोग क्या करेंगे, Y को I में कन्वर्ट करेंगे और ER लगाएंगे. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब भी Y को हटाकर I कर देंगे और EST हम लोग लगाएंगे. तो इस तरह से आप इस चीजों को ध्यान में रखिए. द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग. हॉर्स जो है डॉग से स्ट्रॉन्गर होता है. एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी एलिफेंट इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है. सो स्ट्रॉन्गेस्ट, सो विल ऐड EST. दिस इज नॉर्मल वर्ब, देन ER and with EST. Now this one. Now complete the following in the same way using the words juicy or exciting. The order may vary according to your choice. Apple is juicy. Orange is juicier than apple. Sugarcane is the juiciest of them all. See, ये इतने सारे हम लोग, इतने सारे क्वेश्चंस कभी नहीं आ सकते. 40 मार्क्स में, 30 मार्क्स में इतने सारे क्वेश्चंस कभी कवर नहीं हो सकते. लेकिन हम इन सभी को क्यों ले रहे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट जो है ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो. सपोज आपको कोई वर्ड पूछ दिया जूसी, तो जूसी में हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में वाई है, तो वाई का हमने आई कन्वर्ट कर दिया और ER लगाया है. वाई का आई कन्वर्ट करके EST लगाया हुआ है. तो इसीलिए ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं. रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग. ये क्लाइंबिंग दोबारा रिपीट हो गया तो इसको काट देना. रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग. स्कीइंग इज मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग. स्कीइंग जो है उससे ज्यादा एक्साइटिंग. रिवर राफ्टिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल, यानी ये तीनों के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसी में होता है तो वो रिवर राफ्टिंग में होता है. नाउ लास्ट वन, यूनिट 8 nobody's friend. इसमें कोई न्यू वर्ड है नहीं, so we'll directly go to the question answer. Reading is fun. What are the things the girl does not want to share? वो लड़की को क्या क्या चीजें शेयर करनी अच्छी नहीं लगती थी. The girl does not want to share her sweets, book and doll. Did the boy share his toffee and tricycle with others? Obviously no. No, the boy did not share his toffees and tricycle with
others, उसने भी कुछ शेयर किया था नहीं. Why are the two children nobody's friend? Because they were not sharing their things. The two children are nobody's friend because they do not share their things with anyone. देखो, आप जब जरूरत होती है, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब ऐसा है कि the friends in need is a friend indeed. मतलब जो जरूरत होती है तब जो काम आता है वही सही फ्रेंड और हकीकत में हमारा फ्रेंड होता है. बाकी तो सब लोग साथ में आके जाके चले जाते हैं, लेकिन जो जरूरत के समय काम आता है वही होता है. What does the child in the last stanza want to share? जो लास्ट स्टांजा में जो बच्चा है वो क्या शेयर करना चाहता है? The child in the last stanza want to share is sweets, ball, books, games, apple and cake. उसकी खाने पीने की चीजें भी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो अच्छी बात है. देखो, फिलहाल तो हम लोग चीजें जो है शेयरिंग केयरिंग वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, लेकिन जब भी नॉर्मल रूटीनल लाइफ हमारी चलती है तो क्या हमें हमारा खाना वगैरह जो सारी चीजें है वो शेयर करनी चाहिए. Come to the next. What are no words? Several words mean no. The word never is one. It means at no time or not ever. यहाँ पर कुछ words है जो जिसका मतलब no होता है. एक never है, never का मतलब कभी नहीं. No time, not ever. Actually इसका अगर never का हम लोग जो कहेंगे, अगर अलग करेंगे तो not ever यानी कभी नहीं होगा. Here are some other no words. Read them. Nobody, no, nowhere, no one, none, nothing. Now come to the identifying the words with no. Read the given sentences and underline the no word in each. Now here we need to underline the word with no. This is nobody, so it is with no. Again, Ram has no book, so no book is a word with no. Can no one help him? Yes, no one is the word with no, so we'll underline it. Was Gopal nowhere around? We'll underline nowhere because it is a word with no. None of the two boys came. So none is a word with no. This is no word. We'll underline this one. There is nothing to do. So nothing is a word with no. So we'll underline this one. I have no coat. So we'll underline this one. No coat. Radha is never late. So never is a word with no. We'll underline this never. Okay. Now we'll write the rhyming word. We'll read it out. Say aloud. Nobody, everybody, somebody. Cycle, bicycle, tricycle. Share, care, stare. Hair, pair, steer. So we will write the rhyming words for this one. Train, brain, drain, and crane. You can also write your own words. That is, it is not at all compulsory that you have to copy or learn these words. You can write your own words also in your answer sheet. Friend, send, mend, lend. So these are word with END. So this is END, 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 ending with END. Okay. Now I hope that the revision will be helpful for your periodic test examination. So best of luck, be prepared, well prepared, and stay safe, stay home. Thank you very much.